टमाटर डालने के बाद ये जो इसमें आलू काट कर रखे थे, लहसुन और प्याज बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया, गोल्डन हो गया, चिकन भी फ्राई हो गया और अब उसमें चार से आलू भी डाल एक
अच्छी तरह इसकी जो बुनाई होगी है, अब हम इसमें जो है पानी डाल देंगे। जितना भी आप रखना चाहें ग्रेवी इसकी ही शोरबा।